Pooja ji? So ma'am is connected back. So some network issue had come. So I'm so sorry. Should I restart it? Yes, ma'am, you can. Okay. A very warm welcome to all the members present over here, and especially our faculty. Today's faculty, Sir Alok ji. So I, Pooja Dhoot, Secretary of Jodhpur branch of ICAI, would like to welcome you all for today's webinar, the topic for which is creating pivot tables in Excel. First of all, I would like to invite Dhaval sir, the chairman of Jodhpur branch of ICAI, for the welcome speech. Thank you. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Healthy evening to all. I, CA Dhaval Kothari, Chairman of Jodhpur branch of CIRC of ICI, welcome you on today's virtual CP meeting on creating pivot table and dashboards in Excel. I extend a very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, CA Alok A. Sethi ji. I also welcome all managing committee members, all the senior member of professions, participants and viewers. We all use Excel in our daily working, and it is a good tool for data analysis. I hope today's VCM will help us to accelerate in Excel. By these words, over to CA Pooja Dhoot. Thank you so much, sir. And now I would take the honor to introduce today's faculty who have remarkable achievements. Sir Alok Ji Sethi sir. He is a financial planner at Sethi Financial Services. He is an enthusiastic financial service professional and a financial planner who does planning with current money needs and long-term financial goals. He is also a corporate trainer, works as a specialist responsible for increasing companies' productivity by teaching new skills and knowledge to the employees. Talking about his professional qualification, Sir has done investment and financial planning specialist by FBSB India in 2021, retirement and tax planning specialist by FBSB India 2021. He cleared his CA in 2012 with remarkable achievements, all 60 plus marks. And he has also done advanced diploma in direct and indirect taxes in 2007. He has remarkable IT skills. He has written books on QuickBooks, Wave Accounting, Tally, MS Office, and he has handled many projects on internal audit, Treasury Department, statutory and internal audit work, Punjab National Bank, Oriented Commerce, concurrent audit, and many other achievements. He was a topper at advanced diploma course in direct and indirect tax, and he was also awarded outstanding contribution certificate by Students Council Board and NSS unit. Seriously, all the achievements are really remarkable, sir, and we feel really pleasure to have you on our platform. I now heartfully welcome CA Alok Ji Sethi sir to start with his training and skills towards us. Thank you. Thank you, ma'am, for the elaborated introduction of mine. We all are great members of the institute and following a profession. So I'm just a drop in the ocean of knowledge. That is what I say about myself. And we are honored to have you here. Thank you. And before we start with the session, let me just thank the chairman, CA Dhaval Kothari ji, for inviting me for taking this session, and 2 words for his leadership. So leader kaun hota hai? Who is the leader? A leader is someone who knows the way, who shows the way, and who take us to that way. तो जिसको रास्ता पता है, जो रास्ता जानता है और जो रास्ते पे ले जाता है सबको, वो एक लीडर है. So under his leadership, the branch is doing good activities. So I thank him for that, inviting me. And now coming back to the topic for today, in Excel, we'll be learning how to create pivot tables and dashboards. Now, सबसे पहले, whenever you start learning any topic or you attend any VCM, the objective or why should be very clear. क्यों करना है, क्यों सीखना है? Excel हम लोग already करते हैं, फाइनेंशियल्स के लिए काम में लेते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है या ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है, वो एक्सेल में बनती है. तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट वी कैन गिव टू आवर क्लाइंट्स
apart from the usual practice areas that we are following, because अब धीरे धीरे everything is going on automation format. So if we do not update ourselves, then somewhere we'll be lagging behind. So it is very important to keep on updating ourselves with the latest technological development also, along with the academic aspects. Income tax change होता है, GST change होता है, amendments होते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं, VCM अटेंड करते हैं, अपडेट होते हैं. बट टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से इम्प्रूव हो रही है, उस स्पीड से क्या हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं. हम फोन में एप्स इंस्टॉल करते हैं बहुत सारी, उस ऐप के भी अपडेट्स आते हैं, आप अपडेट करते हैं नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ फीचर्स हम मिस कर रहे होते हैं. Similarly, when we are working as a professional and we are working for the client, it is equally important to update ourselves with the technological changes and learn something new so that we can give value addition to our clients. And we should also feel productive कि हाँ यार ये काम इतना टाइम लगता था वो इतना जल्दी आसानी से हो गया, और इतना इफेक्टिव, इतना प्रेजेंटेबल वे में मैं अपनी रिपोर्ट्स बना पा रहा हूँ. So today my deliberation would be to take you from very basics to creating a dashboard and pivot table. और dashboard क्या होता है? It is just a representation to the management about their figures. सी जनरली क्या होता है कि सीए बैक एंड पे काम करता है, लेकिन एमबीएस जो होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, वो बोर्ड मीटिंग्स में वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं. डेटा हम बनाते हैं, काम हम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कोई और कर रहा होता है. सो व्हाई कांट वी टेक द फ्रंट सीट, व्हाई ओनली वी शुड हैव द बैक सीट? सो विद दिस टूल ऑफ डैशबोर्ड्स, everyone would be able to take on the front seat, and we should be able to present the data which will have a visual impact to the management. Now to start this session, I have created a poll, ठीक है, and I wanted to know my audience के जो हमारे members हैं जो जोधपुर branch से join कर रहे हैं, there may be some other members from other branches also. I would like to know about your level of experience with Excel. So since it is a virtual meeting, we are not physically present, तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं. Although I am seeing Dhaval ji for the first time, हम लोग साथ connect हुए हैं. Although we are connected on Facebook and Instagram and virtual media पे, social media पे, but there's the first interaction with him and the members. So I'm just launching a poll. I want everyone, all the participants present in this meeting, to choose your options so that I can have an idea about the your knowledge base in Excel, and then we can take this journey forward. So on this screen, you will see a poll. There are some questions which have some options. तो आपको select करना है जो भी option आपको अच्छा लगता है. I'll just read out the questions for the ease of understanding. So number one is, how much are you excited for this session? So I can see that there are 98 participants already, and I know it is going to increase with the passage of time. So super excited or super duper excited? You can move. There are 5 questions in this poll. Second question is, how often do you use pivot table? Sometimes or never? So I want to have an idea कि कितने लोगों ने pivot already बनाया है, नहीं बनाया है. Third question is, have you ever created a dashboard? So it is relatively a new concept, or so many people might have not prepared, but maybe you must have already made a dashboard. Then pivot table and dashboard seems too easy, difficult, very hard, extremely hard. And the last and the most important question, which version of Excel do you use? 365, 2021, 1916 and 2010, or older than that? So 35%, 36% people have already participated on the poll. I just wait for 1 or 2 minutes so that the percentage should increase. And I want at least 60-70% should participate. 100% participation है तो बहुत ही अच्छा है. But at least 70-80% we should reach, and then I'll end this poll. And we will deep dive into the practical aspects of creating pivot tables and dashboards.
Okay, we are just about to reach 60%. So I'll just wait for 10 more seconds and then I'll just end this poll. So quickly you can just answer the questions which are appearing on the screen and then we'll move towards the learning part. Hopefully sir exemption आ जाए. Okay, sir. So now I'm sharing the results so that everyone can see that. So 59, almost 60% says that they are super excited. 41 says that they are super duper excited. Okay. Second, how often do you use pivot tables? So 45% sometimes, 18% have never used a pivot table. 13% says once in a while, and 25%, 1/4 of population are mostly using pivot table. That seems good. Only 60% out of the 100 people who have voted have created a dashboard. Rest are newbies or freshers. That is good. So I have a fair playground to teach you how to create a dashboard, and जिन्होंने बनाया है, they can participate in this discussion. Then how it seems, see, whenever we start something तो शुरुआत में difficult लगती है, धीरे-धीरे हम practice करते हैं and becomes easy. तो Excel भी ऐसा है, it is a vast सॉफ्टवेयर और एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. बट हाँ 4% से कि इजी है, डिफिकल्ट 55% feel it is difficult. I assure you that after attending this at 6 p.m. it will not be difficult now. And only even 11% people are using 365. I will request everyone in the audience members to upgrade your Excel. ठीक है, और 2021 19 भी आ गया है, तो बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं जो पुराने वर्जन में नहीं है. 13% are using Excel less than 2010 and 23% are using Excel 2010. Definitely उन लोगों को तो 19 और 21 में शिफ्ट हो जाना चाहिए. Excel 2016 is still okay, but what I'm using Excel 365. Okay, so with this we now start our session, and let me share my screen with you all. Okay, I hope the screen is visible. Yes sir. Okay, sir. So in this screen you can see two things are there. On the left hand side there is a data, and on the right hand side there is a image. Okay, so I assume that everyone has taken their lunch. ठीक है, उसके बाद भी सर राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको? डोंट फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? यू कैन शेयर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं. I want everyone to answer in the chat box what image you can see in the right hand side. There is some data on the left and there is an image on the right hand side of the screen. So on the right hand side we can see raw data. Okay, Dhaval sir has answered raw data, but what is there in the basket? So basket के अंदर क्या रखा हुआ है? Potato, right? Potatoes. Yes, we can see potatoes. Now, if I ask you, you have to consume these potato. Can you consume these raw potatoes? एक एक उठा लो सब लोग और खाने. Can we consume the raw potatoes in the basket? No. Everyone is saying no. Now you look at the left hand side of the image. आपको डेटा दिख रहा है. It is in the raw format, raw data. किसी भी सॉफ्टवेयर से हम लोग डेटा डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या चाहे वो अगर बैंकिंग के ऑडिट करें तो फिनाकल हो सकते हैं, या कोई ईआरपी सिस्टम हो सकता है, या कोई टैली डेटा हो सकता है. Whenever we are downloading any data in Excel, it comes into the raw format. But can you consume that data? इस डेटा से कोई मीनिंग निकल रहा है, या ये डेटा जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है. It is not a formatted data. So we cannot consume it. We cannot take out any meaningful information from this data. Now I take you to the structured data. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. और आप लोग सब जोधपुर से हैं. धवल सर, आप क्या दिख रहा है राइट हैंड साइड पे?
What can you see now? On the image, I'm not still talking about the data, I'm just talking about the image. Ready to eat food, yes. Structured data, potatoes, fritters, yes. Mirchi Mirchi bada, bada. yes. तो जनता की मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है. Whenever we go to Nakoda ji and we stay, we take a halt at Jodhpur just to have those mirchi badas. तो अभी हम रॉ डेटा की बात कर रहे थे, आलू की बात कर रहे थे, कच्चे आलू की, और वहां से हम आ गए हैं मिर्ची बड़े. सो एवरीवन वुड लाइक टू हैव दिस मिर्ची बड़ा. ठीक है, कोई भी ऐसा जना नहीं होगा जिसको मिर्ची बड़ा नहीं पसंद होगा या नहीं खाना चाहता होगा. कोई ऐसा? आई डोंट थिंक सो. So similarly, what is the Mirchi Bada for us? It is the structured data, the data which is into the structured form. तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो डेटा था, this is a unstructured data. You can see that you are not able to read the name of the salesperson properly. Somewhere you are not able to read the geographical location property. आपको products भी नहीं दिख रहे हैं, sale amount जो है वो रुपी सिंबल नहीं आ रहा है उसके साथ, या डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे, नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर. ठीक है. So first thing is that we should structure that data. Okay, so I'll start very basic, और थोड़ा basic से start करेंगे, then I'll take you to the pivot table and dashboards also. ठीक है. तो सबसे पहली चीज ये है कि भी डेटा को स्ट्रक्चर कैसे बनाएं. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जो डेटा है, is it into a table form or it is just a structured data? Can we say that this data is a tabular, is in table? We have been using Excel from so many years, but आप ये बताएं कि जो डेटा है ये टेबल में प्रेजेंटेड है या नहीं है. So people are saying yes, yes. Appearances say it is like a table, yes. Okay, anyone who wants to say no, it is not a table? मेंटोस का ऐड आता है ना, बार पूछना, या दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि इट इज अ टेबल, बट इट इज नॉट. ठीक है, देखने से लग रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड नॉट इन अ टेबुलर फॉर्म? ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक्स. ठीक है, और यहीं से ही आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, जो मिसकंसेप्शन है या जो चीजें हमें नहीं पता है एक्सेल के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा. तो ये डेटा सर जो है, इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं, इस डेटा को हम इस रूप में कैसे लाएंगे. ठीक है, पहली चीज. दूसरा ये है कि जब हम एक्सेल यूज करते हैं और जब हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द शॉर्टकट कीज. जितना ज्यादा आपको शॉर्टकट कीज आएगी, it is not sorted to get some clarity of info. Okay, fine. So the more you use Excel with the shortcut keys, the faster you will work in Excel. ठीक है. Now if अगर ये डेटा को हमको सॉर्ट करना है या प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना है, तो कैसे करेंगे सर? एक एक कॉलम को क्या हम ऐसे ड्रैग करेंगे, एक एक कॉलम को, या डबल क्लिक करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली दैट डेटा विल टेक इट्स शेप? इट विल बी अ टीडीएस प्रोसेस. यहाँ पे तो 6-7 कॉलम्स ही, अगर मान लीजिए 20-30 कॉलम, सो इट विल बी वेरी टीडियस प्रोसेस. सो आई वांट कि एक ही क्लिक ऑफ बटन के साथ हो जाना चाहिए. तो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिंग अ डेटा. Alt CA. Okay, so I've started getting the answer. Okay, fine. Alt O C A. I'm just pressing the keys जो कि चैट बॉक्स में मुझे दिख रहा है. Alt O C A. तो उससे क्या हुआ, सिर्फ हमारा ये जो है ना, इसकी विड्थ चेंज हुई है, बट कॉलम अभी भी आप देखेंगे कि इससे कुछ हुआ नहीं ज्यादा Alt A C A से. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू कि हाउ टू डू इट. और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी शॉर्टकट की याद नहीं रखनी होगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी या वो लोकेट हो जाएगी. सो व्हेन यू प्रेस द Alt की, कैन यू सी सम अल्फाबेट्स आर गेटिंग हाइलाइटेड इन द मेन्यू. ऊपर जो आपको काफी सारे टैब्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टैब्स, और टैब के नीचे जो होता है उसको रिबन बोलते हैं. तो जैसे ही मैंने Alt प्रेस किया, व्हेन आई एम प्रेसिंग द Alt की, you can see that some of the alphabets are there. ठीक है, अभी हमें को ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, बट यहाँ पे अल्फाबेट्स आ जाएंगे. ठीक है. सो अल्फाबेट इज देयर, बट आई वांट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डू फॉर्मेटिंग. ठीक है, मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाहता हूँ. तो होम टैब में जो पहला क्लिपबोर्ड है, फिर फॉन्ट है, फिर अलाइनमेंट है, उसका नंबर है, फिर न्यू ग्रुप है, स्टाइल सेल्स है. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू इज Alt H.
then you will have to change the width. ठीक है, width size change करनी है, तो next कहाँ जाना होगा आपको? First I'll select the data. तो कंट्रोल ए से मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एच पे प्रेस की मैंने, ठीक है। नाउ व्हेन आई प्रेस ऑल्ट होम, अब देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू फॉर्मेट द सेल्स, तो हम फॉर्मेट के नीचे ओ दिख रहा है, आई प्रेस ओ एंड यू विल सी अ ड्रॉप डाउन, एक मेन्यू खुल गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और वहां पे आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ आई के साथ में। सो व्हेन आई प्रेस आई, now you can see that all my columns are auto width, सब में properly width arrange होगी, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, Alt H O I हमने किया है, उसके साथ में ये arrange हो गया डेटा, that is the first step, ठीक है। Now I ask you कि is it in a tabular form? So it is not in a tabular form. Tabular form में करने के लिए क्या करेंगे? Again, anywhere in this data you will press Control T. So it will give you an option to create a table and you can press OK. Now see, this is a data in a tabular form. इसमें और ये वाला जो स्ट्रक्चर डेटा है, इसको हमने फॉर्मेट से इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिए थे, रो के कलर चेंज कर दिए थे, लेकिन ये टैबुलर फॉर्म में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और नाउ इट हैज कम इनटू अ टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में डेटा होना क्यों चाहिए? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए हेडिंग गायब हो रहा है, ठीक है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज दिस कॉलम जी एंड व्हाट इज दिस कॉलम एच, सो हेडिंग्स आर नॉट विजिबल नाउ। तो हेडिंग विजिबल हो उसके लिए हम क्या करते हैं? एनीवन इन द चैट बॉक्स, that heading should remain in the screen, on the screen, and when I scroll down I can see I would be able to see the headings. What do? You do free spans. Yes, very good, free spans. So that is a common technique which we do, okay. And where do you get the data on of free span? In the view column, in the view tab. So Alt W, F and F, so you can free span. अब देखिए फ्री स्पैन तो पता है, लेकिन फ्री स्पैन लगाना कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जिस रो तक डेटा आपको चाहिए, जिस रो पे आपको डेटा चाहिए, उसके नेक्स्ट रो पे ही आप अपने सेल को रखेंगे, ठीक है, रो या कॉलम पे। अभी हमको ये रो फ्रीज करनी है और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे फ्री स्पैन्स, ठीक है, Alt H double F. So I have applied the free spans. And when I'm scrolling down, now I can see the headings. ठीक है, ये तो आपको पता ही था, तो मैंने इसमें नया क्या बताया? अब मैं आपको कुछ नई चीज, ऐसी चीज बताता हूँ जो आपको नहीं पता है, because that will be used, that will create a utility of me, of you having me here, ठीक है। अदरवाइज आप तो बोलेंगे सर ये तो पता ही था। अब देखिए सर, जब when you convert the data into table, what it does, you will see a magic today. अब हमने सिर्फ टेबल बनी, ऑटोमेटिकली फिल्टर्स आ गए हैं, पहली चीज। दूसरा, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, कैन यू सी सम डिफरेंस इन द हेडिंग? यहाँ पे आप इस रो पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ABCD जहां लिख रहा है उस रो पे आप जस्ट फोकस ऑन दैट रो एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन नाउ। कैन यू सी एनी डिफरेंस व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग डाउन? यस। अच्छा, मैं इस वाले डेटा पे जाके स्क्रॉल डाउन करता हूँ, रॉ डेटा पे, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमारे को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्री स्पैन्स भी कर देते हैं, if I apply free spans also and I try to scroll down, then also I am just seeing this heading intact, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? In the structure data, the headings of the table are getting merged with these headings ABCD. So that is the learning number 1 of the day. So when you can see filters, yes, can see filters in the column heading, table heading shown as column heading. So that is the beauty of this feature, ठीक है। Now this is the data, ठीक है, we can filter out and we can find out things. Suppose I want to find out the sales by geography.
कि न्यूजीलैंड में कितना सेल हुआ, यूएसए में कितना हुआ, कनाडा में कितना हुआ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इफ यू डोंट नो पिवट टेबल्स, हाउ यू हैव बीन डूइंग इट, सॉर्ट कर देंगे और टोटल लगाएंगे, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, राइट। बट today we'll learn कि how and why we should know pivot tables. So for this I have prepared a small case study to discuss with you all to show you कि what pivot tables can do. So what info top management would like to know, ये जो डेटा है सेल्स डेटा है, तो उनको सेल्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन वो हमसे चाह सकते हैं, मांग सकते हैं, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वी शुड प्रोवाइड देम, वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड देम विद द हेल्प ऑफ पिवट. So they would like to know the sales by salesperson or geography or product or customer. बोला सेल्स निकाल के दो, सेल्स पर्सन ने कितना कितना सेल किया है, डिफरेंट सेल्स पर्सन डिफरेंट ज्योग्राफी में कितना सेल हुआ है, प्रोडक्ट वाइज सेल कितना हुआ है, कस्टमर वाइज सेल कितना हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल आल्सो लाइक टू नो कि व्हाट आर द हु आर द टॉप 5 सेल्स पर्सन. मान लीजिए उनके लिए कोई इंसेंटिव स्कीम है और 5 सेल्स पर्सन को कुछ परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव देना है, इंक्रीमेंट देना है, ठीक है. So they would ask you this data. Then they would like to know the product wise sales, which product is doing well, which is not doing well. Then reach to customers, how many products we are able to sell to how many customers. Sell by geographies, then sell by top 5 products by geography, by product, and by reach to customers. Now this is all possible through filters, but how many filters you will place और हम इसको किस तरीके से आसान बनाएंगे ये हम देखते हैं, ठीक है. So now I am starting teaching you how to create a pivot table. So जो लोग थे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जिनको pivot table पहले कभी नहीं बनाया था, तो you just focus on that. और जिन्होंने pivot table बनाया भी है, so you will be able to get some new insights on how to create a pivot table and how multiple data can be multiple pivots can be used. And then we'll also move towards dashboard, creating a dashboard. And this dashboard can be used in our practice also with our own client data. आप Computex से अपना क्लाइंट का डेटा एक्सपोर्ट कर लो, कितने क्लाइंट्स हैं, उसका क्या रिटर्न जाता है, क्या है. उसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि कितने का ऑडिट हो गया, कितने का रिटर्न चला गया, कितना नहीं गया. दिस ऑल थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल. ओके. Now to insert a pivot table, what you have to do is you have to go to the insert menu. I will just freeze my ribbon, it is going off again and again. Always show ribbon. Okay. Now, so whenever you have to insert anything, you go to the insert menu, the tab, and on the first ribbon, first icon you can see, first command you can see, first function you can see is tables. और टेबल में आता है pivot table, तो वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है. If you want to have the shortcut key, you can create pivot by a shortcut key also, ठीक है. तो again insert Alt N ZB and so when you apply pivot, when you insert table and then you select pivot table, a dialog box comes up. इसको dialog box बोलते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, select a table or range. किस टेबल पे आपको pivot क्रिएट करना है वो आप select कर लें. So I've selected a table. Now you can give a name to this table also, ठीक है. नेमिंग कन्वेंशंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो हमने ये select करा entire table. Alt Control A से you can select and यहाँ पे दिस इज अ फॉर्मूला बार जहाँ पे आपको फॉर्मूले दिखते हैं या हेडिंग्स दिखती हैं, ठीक है. उसी के साथ में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे यू गेट द सेल एड्रेस. इसको आप नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन से सेल्स डेटा. सो वी हैव व्हेनेवर वी सेलेक्ट सेल्स डेटा, ऑटोमेटिकली ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगी. आपने इसका नेम रेंज दे दिया है, ठीक है. सो दिस इज द सेल्स डेटा, दैट इज द टेबल नेम. नाउ व्हेन आई गो टू इंसर्ट एंड देन pivot table, so I can just say sales data here, ठीक है. तो ये टेबल रेंज हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमने अगर कोई टेबल का नेम दे रखा है तो हम वो नेम से भी रेफर कर सकते हैं. तो दिस इज वन थिंग. सेकेंड, इट आस्क यू कि वेयर यू वांट योर पिवट टू बी प्लेस्ड, ऑन द सेम शीट और सम अदर वर्कशीट.
So choose where you want the pivot to be placed, new worksheet or existing worksheet. So I want it to be in the existing worksheet only. ठीक है, और existing में आप यहाँ पे भी pivot बना सकते हैं. ठीक है, anywhere in the pivot, or we can create a new worksheet also. Let me create a new worksheet and call it as pivot. ठीक है, और again I can say existing worksheet, और जो मैंने नई worksheet बनाई है उसमें कहीं पे भी एक cell मैं select कर लूंगा and I say okay. So I can see that a layout comes on my table. ठीक है, this is called as a pivot layout. अब आपको pivot से क्या information चाहिए? ठीक है, जो information हमारे को चाहिए उसी के according we will design our pivot. Now this is the important area which you need to learn. Now there are 4 pillars of pivot. पहला जो यहाँ पे आपको 4 चीजें दिख रही हैं, choose field to add to report. These are the fields जो हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट डाउन. सो यू हैव फील्ड लाइक सेल्स पर्सन, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, सेल्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड लाइक दैट. उसके बाद 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज 4 पिलर्स ऑफ पिवट टेबल: फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज. नाउ यू कैन प्ले अराउंड एंड आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा डेटा रखना है. Now we'll go to the requirement part and then we'll come back to this. So first requirement was कि arrange the data as per salesperson. ठीक है, I come to my pivot table and salesperson से data arrange करना है, तो मेरे row में कौन जाएगा? Salesperson. So I'm just picking the salesperson and dropping it in the row. So you can see the names of the salesperson appearing in the rows. Now salesperson के सामने आपको क्या देखना है कि इस salesperson ने कितना सेल किया है. So sale is an amount that will come to your values. So when you just pick and drop sales, you can see that these are the salesperson और इन्होंने इतना सेल किया है. ठीक है, now अब हमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है कि यार ये 10 लाख है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कितना है. तो we want that comma should be there and rupee symbol should be there. ठीक है, so if you are aware or not I don't know, लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट और 4 की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड 4, you will see that it gets converted into amount format. ठीक है, और आप लोग ये ट्राई करेंगे तो it will show you dollars. मुझे यहाँ पे रुपी सिंबल दिख रहा है. If you are using a laptop with me and your Excel is on, you can just try it. ठीक है, and let me just share this sheet also with you all. ठीक है, मैं चैट बॉक्स में इसका लिंक डाल रहा हूं, so you can download it and practice along also. Okay, just I need to close it as I'm just closing it for the timing and I'm just sharing it with you all, and again I'll open that. Okay, so now the Excel file which I'm using is there in the chat box. You can download it and I'm sharing the screen again. Okay, so I hope the screen is visible. Dhaval sir? Yes, sir. Okay, fine. Now we have the sheet with us और हमने क्या किया, हमने सेल्स पर्सन के हिसाब से सेल्स निकाली, तो जो पहला रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया. Then we want the management wants the sales by geography. That means location wise sales चाहिए. Again what we'll do is, now you can do the donkey work. Donkey work का मतलब कि again pivot में जाओ और pivot बनाओ, or either we can do a smart work. So everyone would like to do the smart work, no one will want to do the donkey work. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास. So what we'll do is we can just copy this pivot table and we can paste it here. ठीक है, just मैंने copy किया और I have pasted it. ठीक है,
और अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए सर, वी वांट द सेल्स बाय लोकेशन। सेल्स पर्सन के हिसाब से सेल्स नीचे, सेल्स पर्सन को उठाया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स, दिस इज टोटल सेल्स, यू कैन सी दैट ग्रैंड टोटल जो आ रहा है वो यहीं पे आपको दिख रहा है। बट आई वांट द सेल्स बाय लोकेशन, मुझे लोकेशन वाइज, जोग्राफिकल वाइज सेल्स चाहिए। मैंने जोग्राफिकल को सेलेक्ट करा, एंड नाउ यू कैन सी दैट ऑन द सेम पिवट टेबल आई एम गेटिंग द सेल्स बाय जोग्राफी। ऑस्ट्रेलिया में कितनी सेल है, कनाडा में कितनी है, इंडिया में कितनी है, न्यूजीलैंड में कितनी है, यूके में कितनी है और यूएसए में कितनी है। सो दैट वाज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि भाई एक तो सेल्स बाय सेल्स पर्सन बता दो। सो दिस इज सेल्स बाय सेल्स पर्सन, this is sales by geography, just on a click of a button. Now what is the third requirement? Sales by product and then by customer. Again what you'll do is you will just copy this, I'm copying it with the heading, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे हमारे को चाहिए सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो धवल सर क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट वाइज पिवट बनाना है। सर ज्योग्राफी से हटा के प्रोडक्ट डाल देंगे। वेरी गुड। तो बस सिंपल है, कितना सिंपल है, जितने लोग को लग रहा था कि डिफिकल्ट होता है पिवट बनाना, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हमने ज्योग्राफी हटाया और प्रोडक्ट डाल दिया, एंड सी यू कैन सी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, और प्रोडक्ट वाइज सेल्स आ गई। इट इज जस्ट यू हैव टू गिव सम टाइम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड एक्सेल इज एन अमेजिंग टूल एंड इट इज गोइंग टू बी। सेल्स बाय प्रोडक्ट के बाद चाहिए हमारे को सेल्स बाय कस्टमर। Okay, now in this data you will see that the customers name are not there but numbers are a customer पे, ठीक है। तो let us try कि इसका pivot कैसे बनेगा, ठीक है, और बनेगा तो क्या दिखेगा उसके अंदर। So I'm just again I've already copied, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, again we'll pick up drop this product and we'll select the number of customers. अब this is exactly not giving me any meaning. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई इतने रुपए की सेल 0 को हुई है, 3 को हुई है, 9 को हुई है, व्हाट इज दैट। तो अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ इट। आई मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को ये पता होगा, बट व्हेन यू क्लिक इनसाइड द पिवट ऑन एनी वैल्यू, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट, इट ओपन्स अ डिफरेंट शीट एंड इट शोज यू द ब्रेकअप ऑफ दैट। तो वो जो अमाउंट आ रहा था उसका ब्रेकअप बता दिया कि ये सेल्स पर्सन ने ये प्रोडक्ट इस ज्योग्राफी में इतने कस्टमर्स को बेचा है और ये उसका सेल अमाउंट कलेक्शन है। अगर नंबर ऑफ कस्टमर के की जगह पे हमारे पास अगर नाम होते तो हमारे को सेल्स बाय कस्टमर्स भी मिल जाती, ठीक है, बट देयर वाज नंबर। सो आई हैव क्रिएटेड 4 pivots: sales by salesperson, sales by geography, sales by product and sales by customer. But the management wants more. ये तो बहुत जल्दी हो गया, बोले यार ये क्या, हमने तो सोचा बहुत टाइम लगाओगे ये रिपोर्ट निकालने में, तुमने तो 2 मिनट में निकाल के दे दिया। So the management is asking for some more details, and what they are asking is कि give us the top 5 salesperson, top 5 salesperson by sales wise, geographical wise, product wise and reach to customers. तो आई वॉन्ट मल्टीपल डेटा इन माई पिवट। अभी तो बहुत सिंपल पिवट बन गई जहां पे आपको सेल्स पर्सन के नाम के सामने सेल दिख रही है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सेल्स पर्सन के साथ में आई वॉन्ट द लोकेशन ऑल्सो, कि किस लोकेशन में किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया। So now we will add more fields to it. So I'm just copying that sales by salesperson pivot, और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। And now you want to see which salesperson has sold what product in which area, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इस सेल्स पर्सन के नीचे में आई एम पुटिंग ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है। विद द सेल्स पर्सन आई एम पुटिंग ज्योग्राफी अंडर रोज, ठीक है। आई शो यू ऑल द कॉम्बिनेशन, बट फर्स्ट आई एम सेलेक्टिंग ज्योग्राफी।
and then I'm putting product below geography. Sales, geography, and then I'm putting the product. So now you can see that the pivot has changed. ठीक है, अभी हमारे को यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेल्स पर्सन के नीचे कंट्री या लोकेशन ज्योग्राफी और उसके नीचे प्रोडक्ट. ठीक है, बट दिस अगेन इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. सो व्हाट आई विल डू इज, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यू विल गो टू पिवट टेबल ऑप्शंस, पिवट टेबल ऑप्शंस, एंड देन यू विल सेलेक्ट द डिस्प्ले ऑप्शन. और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट enables dragging the of fields in the grid. इस पे आप क्लिक कर दें एंड यू प्रेस ओके. Should I repeat this part? So I think once. Yes, definitely. Now, okay, let me just show you one thing. If you want to see a summary, है ना, पहले हम तो आप क्या करेंगे, इस पिवट पे राइट क्लिक करेंगे, just right click on anywhere in the pivot, and then there is a option of expand and collapse. तो collapse entire field पे जब आप क्लिक करते हैं तो you can see, let me just do it from here. This was the original pivot, sales by salesperson. देखिए ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, जो हमने pivot पहले बनाई थी on the left hand side. This was the first pivot that we created, sales by salesperson. It was showing first salesperson का सेल था 10,03,710 का. इस टेबल पे आते हैं, यहाँ पे भी 10,03,710 it is visible. But can you see any difference between this and this? Let me hide these. Sir, इस pivot और इस pivot में क्या difference है? Can anyone tell me what is the difference between these two pivots? Expand option, yes, right. Expand option is there in the second one. So when you click on this plus, it gives you 5 more options. It is a elaborated version of the previous one. यहाँ पे सिर्फ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है elaborate expand करने का, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है. तो सेल्स पर्सन के नीचे देखिए उन्होंने समरी बता दी कंट्री वाइज, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, कनाडा में कितना है, इंडिया में कितना है. नाउ यू वांट टू सी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे हैं इसने. तो यू कैन अगेन फर्दर क्लिक ऑन दिस एक्सपैंड बटन, यहाँ पे प्लस पे और क्लिक कर दो, और ज्यादा डीप डाइविंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट दिख गए. बट कितना ये प्लस माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट दिस पिवट, राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू पिवट टेबल ऑप्शंस, एंड देन ऑन द डिस्प्ले यू कैन सेलेक्ट क्लासिक पिवट टेबल लेआउट. और आप देखिए 2 कॉलम और ऐड हो गए ऑटोमेटिकली, ज्योग्राफी और प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट कर रखे थे. जैसे ही मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा, एक्सपैंड करूंगा, तो नेक्स्ट कॉलम में उस सेल्स पर्सन के सामने मुझे उसका ज्योग्राफिकल दिखेगा लोकेशन. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो अगेन आगे वाले कॉलम में, तो इट इज लाइक अ फ्लो चार्ट कि पहले हम पर्सन पे गए, फिर लोकेशन पे गए, फिर प्रोडक्ट पे आ गए. So it is very neat and very presentable. ठीक है, okay. Now if you want to repeat this, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन सा सेल्स पर्सन था, या सबको आप खोल लेंगे तो नहीं दिखेगा. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन से on the pivot options, display में और repeat items label. In the field option you will get this. So right click, field settings, and then layout and print repeat item label. Okay.
So when you scroll down also you will see कि हाँ ये एरिया में ये है इसका, ये सब रिपीट हो रहा है, ठीक है. So this is pivot, ठीक है. आपको यहाँ से आ गया. Now I want just the 5 top employees. यहाँ पे आपको you can see there are 9 or 10 employees here, ठीक है. Count is 10. I want the top 5. मैनेजमेंट को 5 चाहिए, 10 नहीं चाहिए. तो कैसे करेंगे? Should I sort it as per ascending to descending और फिर वहां से मैं देखूं कि top 5 कौन आ रहे हैं? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है. What you can do is you can go to the pivot table option और एंड डिस्प्ले में आप यहां जाएंगे. You will use the filter option now. Right click and then filter. Filter में top 10 दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे and on the top 10 instead of top 10 you can see top 5 items by sales, sum of sales, and you can see now it will show you the top 5. So we wanted top 5 only, and then if you want to see the top 5 locations जहाँ पे सेल ज्यादा हो रही है, so we'll go to the location वाला pivot table. Or if you want to see the top 5 products, what you can do is again right click, filter, top 10 की जगह यहाँ पे आप top 5 लिख दीजिए and then press OK. You will get the top 5. So this is how you can create multiple pivot tables with the inform as per the requirement of the management. Now they want the top 5 geographical sales by salesperson and sales by product wise in same pivot if you want both the information. ठीक है, तो यहाँ पर geographical और product wise भी चाहिए हमारे को, तो we can get that also. ठीक है, और इसमें करना क्या है? Again you go to the show field list. Now what you have to do is if you want कि पहले geography आए, फिर sales person आए और उसके बाद में product आए, तो what you have to do is you have to just replace the geographical सेल्स पर्सन बाय ज्योग्राफी. आपको इसका हायरार्की चेंज कर देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिवट टेबल इज अ डायनामिक थिंग, इट विल चेंज. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको पहले ज्योग्राफिकल चाहिए फिर सेल्स पर्सन चाहिए, तो आपने पहले जो पिवट में सेल्स पर्सन था उसकी जगह पे यू विल पुट ज्योग्राफी. सो फर्स्ट आई कैन सी द लोकेशन, देन द सेल्स पर्सन एंड देन द प्रोडक्ट कैटेगरी. सो इट इज दैट इजी. Okay. Now what is the next requirement? Sales, geographical wise, product wise, top 5 products. So you want to see the product by geography. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाली टेबल बना रखी, पिवट टेबल. These are the top 5 products. Now you want to see the geography also and the salesperson also, keeping product as base. तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे and then show field list and you will add more things, add the geographic. तो सामने आ गई. अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम कॉलम में ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? Let me show you that also. That will be more interesting. So I'm copying this sales by salesperson pivot table, pasting it here. Now I haven't told you what happens if you drop anything in the column. ठीक है, तो आप यहाँ पे pivot पे कॉपी क्लिक कर रहे हैं and in the field options you are putting the geography in the column. Okay, fine. Let me create a pivot itself. Is overlapping. इसको मैं delete करता हूँ.
Okay, this is my data. Now I am again creating a new pivot. Just 10 minutes more on pivot and then we'll jump to the dashboard part. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक existing new worksheet में ले लेते हैं and I press OK. So it has created a new worksheet and now I am dragging the salesperson in the rows as I did before and the sale amount in the value. Okay, now we are dropping the geography in the column part. See how you are getting to see the data now. So you can see कि कौन से सेल्स पर्सन ने किस एरिया में कितना सेल किया है. And when you put the product under geography in the column, what happens? So ऑस्ट्रेलिया में ये अलग अलग प्रोडक्ट सेल हुए हैं और इनका ये सेल आ गया. And you can just apply collapse over here, collapse entire field. You'll get to see the summary. So this is how you can manipulate with the pivot tables. यहाँ पे आपने रो में डेटा डाला तो रो में आ गया, आपने कॉलम में डाल दिया कॉलम में आ गया. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉलम में रखता हूँ लोकेशन और रो में रखता हूँ लोकेशन और कॉलम में रखता हूँ सेल्स पर्सन. नाउ सी व्हाट हैपेंस. So we are just drag and drop. What we are doing is just drag and drop. So you can see I'm just removing this product and I'm putting it in the filter. तो मैं filter में product डाल देता हूँ. Now मैंने क्या किया, रो में रखा है location और column में क्या है मेरे sales person के नाम. So whichever way you want to see the data, you can arrange your pivot accordingly. And when you want to filter on any particular product, the management wants कि मुझे तो सिर्फ caramel stuffed bars की सेल देखनी है और कुछ नहीं देखना. तो you can just select this and you can press OK. And you can see कि in which location what salesperson has sold what product. Now free span की हम लोग बात कर रहे थे. So free span कैसे काम करता है, we can learn from here also. So I put my cell over here and I apply a free span. View में जाएंगे and you apply a free spans. So when you move this towards the right hand side, this sales by sales this thing category is freezed और आपको यहाँ पे अलग अलग सेल्स पर्सन दिख रहा है. ठीक है. So this is pivot table that you can create using different options. If you want to see the number of customers जो हमने select नहीं करे थे, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कितने लोगों को कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है. ठीक है. Now, any questions so far on pivot? What I have just discussed. Any questions? Okay. I hope this speed is good. Now, how can we bring this data into charts and in the form of dashboard? Now, before I start this topic, let me just show you how many kinds of dashboards are there and what is the benefit of having a dashboard. Okay, so I'm just closing my screen. Sure, I'm sharing a new screen with you all. Now, can you see the screens? So I've just Googled on dashboards and there is this website smallman.com and they're selling dashboards. ठीक है, dashboards बनाने के softwares बेचते हैं and you'll be like what you can say surprised to see the price of a dashboard
कि what a dashboard can fetch you. ठीक है, हम क्लाइंट से ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट पहली चीज ये है कि डैशबोर्ड कितने इंटरेक्टिव होते हैं और क्या आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैशबोर्ड व्हिच इज देयर. Let me show you some example which are related to our field. Some financial dashboards you'll see. Okay, let us see this consulting analysis wala dashboard. So there is a human resource and sales dashboard, global sales dashboard with heat map. ठीक है, whole of organization dashboard. ठीक है, key financial matrices dashboard, balance scorecard, revenue and expense. Let us see this revenue and expense wala. So dashboard East Coast, that is the name of a company. ROA, resellers, staff, risk, utilization, ये सब चीजें आपको एक presentable charts के through दिख रही है, and there are different options which are available. You can see the trend lines also, the graphs also, the pie chart also, the riskometer also, effectiveness कितनी है, return कितना आ रहा है, utilization कितना आ रहा है. This is the raindrop chart कि target से कितने department ने target achieve करे, कितने ने नहीं करे. All these things are there readily available. And let us see the price of these dashboards. Okay, because you need to understand कि what you are learning is उसका value क्या है. ठीक है, उसका value हमें पता होगा तो हम सामने वाले को उसका value दे पाएंगे. ठीक है, so this one dashboard is costing $149, assuming it to be $100 only. ठीक है, और 70 rupees एक डॉलर का कॉस्ट होता है. So 100 multiplied by 70, this dashboard is worth rupees 70,000 in INR. But this is giving you the picture in one, the entire picture of the organization in one screenshot. एक ही स्क्रीन पे हमारे को सब चीजें दिख रही है. Everything is visible on this screen. पर जितना easy आपको ये दिख रहा है, जितना visually impactful दिख रहा है, it is not that easy to create this dashboard. It takes lots of efforts and energy and time to prepare a dashboard. Okay, now I'm taking you towards the journey of creating a dashboard. So before I start, are you all with me? Can we have a yes in the chat box? Because I take OC and MCS batches also with students. So I want the session to be interactive. I just want a yes from everyone so that we can start our creation of dashboard. Yes, thank you. Sir, इससे confirm हो जाता है कि लोग सुन रहे हैं. Okay, fine. Great. Now see, I was creating a dashboard. ठीक है, और मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, but I thought कि I'll do it with you all. ठीक है, because we have one more hour now. So we will create a dashboard and we will see how meaningfully, how beautifully we can create a dashboard. And we are chartered accountants, but today we are going to become creative accountants. So you can all call yourself as creative. जितना आप creative होंगे उतने ज्यादा beautiful आपके dashboards होंगे. ठीक है. So for creating this dashboard, I have downloaded a data of a party. ठीक है, and ये sales register है, Tally से downloaded है. ठीक है. So when you open Tally and you can extract a sales register, you can see that the party name is there. This particular score, let me call it as a party name. Then voucher number, GSTN, category. This I have added B2C and B2B. ठीक है. And then location, quantity, sales GST, output GST, output SCST. There is no outside the state sales, so there is no IGST here. Grand total, cost of sales, sales profit, and GP percentage. Okay, you can add some what you can say stock items also. अगर वो है तो वो भी एक column आता है, but हमने वो नहीं लिया because it becomes The screen is not moving. Okay. So now is it visible? Now we are on data sheet. Okay, fine. Yes. So this is the data sheet. What I was saying is I have taken this data from the Tally, and this is 21-22 का data, yearly sales data. ठीक है, तो you can see the party name, the voucher number, the sales voucher number,
GST and category B2B है, B2C है, location, quantity, sales output and all this. Now we want to show the client कि आपका जो सेल हुआ है उसका लोकेशन वाइज कितना सेल है, किस पार्टी को कितना सेल किया है, कितना रजिस्टर्ड को किया है, कितना अनरजिस्टर्ड को किया है, and we want to check this data for our GST returns also or for our income tax audit also. So we want to have a summary of this. So pivot table can help you creating a summary. जिस तरीके से हमारे को चाहिए उस तरीके से summary आ जाएगी. So this will be more relatable now. अभी हम किसी और प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम उसी पे बात कर रहे हैं जो हम डेली करते हैं, GST returns. ठीक है. So this will help you in checking the GST 9 working also. ठीक है. And it will be very easy. बहुत सारी चीजें आपको बहुत easy way में समझ में आ जाएंगी. ठीक है. And then we'll create a dashboard which you can present to the management and you can show them, okay, see, this is how your sales are growing from the last year. So this is a 2-year data which I have taken. This is 21-22, and below that is year 2021. ठीक है, तो ये 2 साल का डेटा है. और if you can see, there are some 3000 rows का डेटा, मतलब 1700 invoices are there almost in a year. Okay, so first thing before we start working on the dashboard, ठीक है, सबसे पहले आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको डैशबोर्ड में क्या क्या चाहिए. फर्स्ट यू हैव टू हैव अ लेआउट ऑफ द डैशबोर्ड and then you have to do some workings and then you can place the things over there. ठीक है, तो इस सेल्स डेटा से हम पहले कुछ कुछ वर्किंग करेंगे और फिर मैं आपको डैशबोर्ड पे चार्ट्स कैसे बन सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, now so this is a 2-year data. What we will do is, this is the working sheet which I've already created just to save some time. ठीक है, but I'll show you कि how you can create a dashboard. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. ठीक है, सेल्स 2 ईयर की सेल्स और उसका डिफरेंस, and it is represented by a symbol. If the sales have increased, it is showing a green symbol going up. The GP have decreased by 32%, so it is showing a red symbol going down. ठीक है, GP रेशियो जो है वो 2021-22 का कम हुआ है as compared to 2021, so it is showing down. Now if you will see, there is a drop down menu here. Now how many people know how to create a drop down menu in Excel? Now we have around 139 participants, including 138 participants are there. How many people know how to create a drop down menu like this? कि आप यहाँ से एक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. I want to see जयपुर का सेल्स, so when I'm selecting जयपुर here, amounts are changing, sales and profit change हो रहा है. उसके बाद मुझे जोधपुर का सेल देखना है तो जोधपुर में ही चेंज हो रहा है. I want to see किशनगढ़ सेल, so it is changing. This year 21-22. I want to see for 2021, it is I've created separately, but हम वहाँ पे भी एक साथ भी बना सकते थे उसको, but यहाँ पे आप compare कर सकते हो कि this was a sale of last year in Kishangarh, this is the sale now, and you can see the difference also. So how many people know how to create a list in Excel? We can use filter. No, how to enter green and red symbols. Okay, now this is all what I'm going to show you now. Okay, just concentrate for some time here and we'll definitely learn how to create all this. Now first I'll show you some charts, how to create some charts. Pivot तो हमने सीख ही लिया है. अब pivot से charts कैसे बनते हैं और chart से dashboard कैसे बनता है वो हम देखेंगे. Because the procedure to create a dashboard is, first you have to filter the data. That means जो sales data है आपका वो clean होना चाहिए. ठीक है, कोई कॉलम ऐसा नहीं हो रिपीट हो रहा हो, कोई हेडिंग खाली हो, वैसा नहीं होना चाहिए. So it should be a clean data. Then you have to do some working based on pivot, and from pivot you can prepare a dashboard. Okay, so I created a pivot location wise sales for 21-22, and this is location wise sales for 2021. Okay, and this is a list that I have created of the cities. ठीक है, तो ये कैसे बनती है ये मैं आपको अभी, first thing that we are going to learn is creating a list,
and that is through data validation. ठीक है, that is a tool in Excel और वो हम सीखने वाले हैं. ठीक है, there are different options of doing it, but the best option is to create through this data validation also. Now this was the sales data. ठीक है, अगर हमारे को लोकेशन वाइज सेल्स देखनी है, what I'll do is I'll select this data and then insert tables and pivot table. ठीक है, I'll just create one more sheet over here. I insert one more sheet and let me just put it here near the sales data. Let me delete this. Let me call it working for dashboards. Okay, now see, this is the sales data for 21-22. There are 1755 invoices here. Okay, and this is the data. Sorry. Okay, so let me just remove this heading and I'm merging the data for the 2 years. दोनों साल का डेटा मैंने एक साथ मर्ज कर दिया. This is ending on 31st March and उसके बाद 1st April 20 चालू हो रहा है. ठीक है, I am selecting the entire data again. ठीक है, and first thing I'm creating a table. अब देखिए यहाँ पे टेबल डिजाइन में ना you can select different designs also टेबल का. ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, any design that suits you, any color, anything that you can do, this is all a part of formatting. So we have selected this. Now we are going to create a pivot over here. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, insert, you have to go to the insert and then tables and then select pivot table. And I want to create in a existing worksheet which I have already created working for dashboard और यहाँ पे हम इसको okay कर देते हैं. Okay, I did not select any cell, so it is saying that the reference is not clear. I've selected a cell in this and I just say okay. So you can see that the pivot layout is here. I just stretch it so that you can see it aram se. We can just pull it down. Now you can see that party name is there, voucher number is there, GST is there. So you have to see कि what is your requirement. आपको location wise sale देखनी है. सबसे पहले हमने location को row में डाल दिया. Then I want to see with the location. This is the location wise sale. I want to see the sale. So I'll just putting the GST sale over here, and I want to see the GP also. So I am putting the GP also. But it is not showing me कि which year का sale it is or which month का sale it is. So I'm just putting the date also in the row. Now you put some attention over here. जैसे ही sir मैंने row मैंने जैसे ही insert date जैसे ही मैंने row column में डाला, this pivot functionality has broken it down into years, quarters, years and quarters. So you can see that अजमेर में 2020, 21, 22 3 साल का सेल दिखा रहा है. तो अप्रैल से दिसंबर 2020 में आएगा, जनवरी 21 से दिसंबर 21 में आएगा और जन फेब मार्च Q4 जो है 22 में आ रहा है. ठीक है, so this is how I have created location wise. Let me just put some more details. I want to have GP also और GP का percentage भी मैं इधर डाल देता हूँ. ठीक है, and I don't want to take a sum, I want to have count. You can add quantity also maybe. अगर जरूरत है तो हम डाल सकते हैं इसमें column में. And then you can put party name also in column. Because there are so many parties, it will take some time. Let us not put it here. Let us put it on the filter room. अभी जो पर्पस है वो ये देखना है कि सेल
ईयर वाइज सेल कितना आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. So let me just collapse this entire field. So it is showing me the sale of Ajmer, Byawar, Jaipur, Jodhpur, Kishangarh, Kota and Udaipur. ठीक है, by city is showing me the sale. Now I want to have it in a chart form. ठीक है, और मैं ये चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ. उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ईयर भी साथ में आए कि किस ईयर में कितना सेल हुआ था. So what you can do is ईयर्स को आप कॉलम्स में डाल दो. So now it is showing 20, 21 and 22. ठीक है. Sum of quantity, let us remove quantity bit because it will not be of any use. Sum of GP and count of GP. Count of GP भी हटा देते हैं. Okay. So now I'm just create a chart from this. ठीक है. This is the first working that you've done. अब अजमेर में आपने जिस जिस पार्टी को भी सेल किया होगा, देखो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 दिखा रहा है आपके. Of 2020 there is no quarter 1 because this year starts from April. Excel understands from January to December, तो वो अप्रैल को फर्स्ट क्वार्टर मानता है. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की सेल यहाँ दिख रही है. 21 में आपको क्वार्टर 1 यहाँ दिखेगा एंड देन 3 क्वार्टर्स एंड क्वार्टर 22 में वी गेट दिस क्वार्टर 1. ठीक है. सो दीज आर द सेल्स पर क्वार्टर. व्हेन यू डीप डाइव और आप क्वार्टर 1 सेलेक्ट करते हो तो यू विल सी जन फेब मार्च आल्सो. ठीक है. नाउ this is the working for dashboard. Now I am create a chart from this. तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, जहां से हमने पिवट टेबल्स लिया था उसी के आगे देयर आर रिकमेंडेड चार्ट्स एंड इट शोज यू डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो. ठीक है. अभी या पिवट चार्ट पे भी आप जा सकते हैं, बट आई गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स. और सबसे कॉमन जो होता है वो है कॉलम चार्ट. सो आई विल सेलेक्ट अ कॉलम चार्ट ओनली एंड आई प्रेस ओके. Now it is showing me what? Let me just zoom in. अजमेर, ब्यावर, जयपुर, जोधपुर सिटी वाइज ये मुझे इतने सारे पैरामीटर्स दिखा रहा है. एवरी 3 years का सेल एंड देन जीपी डोनेटेड बाय डिफरेंट कलर्स. सो आई डोंट वांट टू सी द जीपी, आई जस्ट वांट टू सी द सेल्स फर्स्ट. ठीक है. तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, रिमूव फील्ड. So now it is showing the sales with the labels. Blue color is 2020, orange is 2021 and 22. 21, 22 quarter wise. ठीक है. So if you want to see the comparison कि कौन से ईयर में कितना सेल हुआ है कौन सी लोकेशन में, वो हमारे को यहाँ पे दिख गया. ठीक है. So this is one chart that I have created. You can do some formatting with this also. When you click on these bars और यहाँ पे आप डिजाइन पे जाएंगे, सो यू गेट डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है. और यहाँ से यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस. लाइक दिस इज अ 3D प्रेजेंटेशन. ठीक है. यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू एनी अदर शेप आल्सो. ठीक है. वो फॉर्मेटिंग वाली चीजें हैं, वो थोड़ा सा हम बाद में भी देख सकते हैं. सो आई एम जस्ट नॉट concentrating on this. ठीक है. दिस इज द, आई डोंट वांट टू सी दिस लोकेशन, क्वार्टर डेट एंड दीज ईयर्स, but I want the figures also to be highlighted with this. तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है add data labels. So when you select this add data labels, तो you will see the sales amount in this. ठीक है. मैं अगर सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे बार्स को एक साथ, and then you can add again add data labels. So you will see these numbers. Okay. But यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है. ठीक है. तो what we'll do is we will just right click on this and format data series. Options में जाएंगे. On the right hand side this format data labels का tab is showing, जिसको मैं अभी थोड़ा सेंटर में ले आया. ठीक है. And from here what you can do is you can just select number
और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे शो करना है उसको, कितने डेसिमल प्लेस में, कितना सिंबल के साथ में. इफ यू डोंट वांट एनी डेसिमल्स यू कैन रिमूव द डेसिमल्स फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी नाउ इट इज कमिंग इनटू अमाउंट फॉर्म. लेकिन हम इतना ज्यादा अमाउंट नहीं, हम लैक्स में दिखाना चाहते हैं. ठीक है, आई जस्ट वांट इट टू बी इन लैक्स और थाउजेंड्स. तो उसके लिए भी देयर इज अ ऑप्शन. You can go to customs and you can select from here कि कितना आपको शो करना है. Let me just show it some other. Okay, I'm just missing out on this part, but you can just select the format and वो change हो जाता है. यहाँ से आप उसको convert कर सकते हैं thousands में या numbers में, and that legends will also change. But the idea is you can create a graph over here and you can see that values. So I'm just deleting it for the timing. और ये हमने एक चार्ट बनाया जो एरिया वाइज बन गया. ठीक है, we will put this in the dashboard. ठीक है, ये वाला चार्ट आप यहाँ से कॉपी करें and you can just remove these grid lines also. पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है उसको भी आप हटा सकते हैं. You can see no border line and then yes, you can delete this also. यहाँ आपने ये कॉपी कर लिया and then you can put it on the dashboard and you can put it over here. Okay, now next thing, this is one data. Then we want to see how to create the list where we can select कि कौन सा हमारे को सिटी का सेलेक्ट करना है. ठीक है, लाइक हाउ आई क्रिएटेड दिस, दैट आई विल शो यू फर्स्ट. एंड द लिस्ट आल्सो दिस ड्रॉप डाउन. सो व्हाट ड्रॉप डाउन, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपका ये सिटीज हैं इसको एक कॉपी कर लें आप, यू पुट इट इन अ डिफरेंट कॉलम. ठीक है,
So these are my city. Now I want a drop down to be created from this. Now what you have to do is from this city, you have to go to data, and data में data tools आते हैं. This is also very important, but most of the chartered don't know this. तो यहाँ पे आप जाएंगे data validation, ठीक है? So click on that data validation. Settings में allow. Now if you want to input, कई बार एक्सेल हम भेजते हैं क्लाइंट को और कुछ वैल्यूज डालनी होती है वहां पे. अगर मान लो आप उसका मोबाइल नंबर इंपुट कराना चाहते हो और आप चेक करना चाहते हो कि 10 डिजिट का ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेक्स्ट लेंथ और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे यू कैन से 10 एंड देन ओके. तो अब यहाँ पे मैं कोई भी अगर नंबर 10 से ज्यादा करूंगा तो इट विल गिव मी एन एरर. The value does not match the data validation. So that is called as a data validation. You are validating the data which is getting inputted. But यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, there is only a list और मैं वहां से एक drop down create करना चाहता हूँ. उसके लिए क्या करेंगे, again you go to data validation. Allow from this you select list. ठीक है. अब लिस्ट में पूछेगा सोर्स, मतलब लिस्ट कहां से क्रिएट करनी है, ड्रॉप डाउन कौन सी लिस्ट से कनेक्ट है. दिस इज आवर सोर्स. यू वांट अ लिस्ट टू बी क्रिएट फ्रॉम दिस एंड देन यू प्रेस ओके. नाउ अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा आई इस सेल में, बट व्हेन यू क्लिक हियर यू विल सी अ ड्रॉप डाउन. आई विल जस्ट जूम इन और आप देख लीजिए जो सिटी के सामने लिस्ट था, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा. Select city. Now I want to select जोधपुर. तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, जोधपुर आ गया. I want to select किशनगढ़, किशनगढ़ आ गया. I want to select अजमेर, अजमेर आ गया. But sir, I don't want only the city. I want the sales in that particular city. वो कैसे आएगा, उसके लिए we have to apply a formula. And there is the role of creating a dashboard. यहाँ से हमारा मेन जर्नी चालू हो रहा है. So you want the total sales. Now, how many people know VLOOKUP here? VLOOKUP कितने लोगों को आता है? I'm going to teach you VLOOKUP now. So concentrate here. Now, what does a VLOOKUP does? It is very important tool and everyone should know it. VLOOKUP से क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है अजमेर, हमारा जो डेटा है, ठीक है, उस अजमेर वहां पे जहां पे भी अजमेर आता है, उस अजमेर के सामने जो अमाउंट आ रहा है दैट आई वांट टू टेक. तो आई वांट दिस ग्रैंड टोटल. लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू नंबर इनटू रुपीस. सो द टोटल इज 49,33,000. तो मैं चाहता हूं कि अजमेर के सामने वाली टोटल सेल मुझे दिख जाए. ठीक है, ये कैसे करेंगे, VLOOKUP मेक्स इट इजी. देयर आर डिफरेंट वेज. आप सीधा सा यहाँ से उठा के भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अजमेर सेलेक्ट हो तो अजमेर की सेल्स आ जाए, जयपुर सेलेक्ट हो तो जयपुर की सेल आ जाए, और ये एक ही फॉर्मूले से पॉसिबल है. कैसे होगा, VLOOKUP. नाउ एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल टेल्स यू कि व्हाट इट वांट्स. तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे क्या चीज यूज होनी है, दैट यू शुड नो, and then automatically it will do its work. Now VLOOKUP, what is the lookup value we want to look up for this city. So first you select that table array. That means कि कहाँ से डेटा उठाना है, कौन सी टेबल में ढूंढना है इसको, सिटी को. So this is the table that from where we want the city to be located. ये मैंने पूरी टेबल ही सेलेक्ट कर ली है. कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब इस पूरी टेबल में अजमेर मिल जाए तो उस टेबल में से कौन से कॉलम में से आपको डेटा उठा के लाना, निकाल के लाना है. सो यू विल हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कॉलम. सो कॉलम 1 वाज सिटी, 2 3 4 5 is the grand total. So I have written 5 here and then I press comma and it is asking true or false. Now what is the difference between true and false? True says approximate match, false said exact match. So I want to go for exact match and then press enter. Now see the magic. अजमेर
के सामने आपको अजमेर की सेल दिखाई दे रही है 49,33,914 that was the sale from Ajmer city. ठीक है, let me just hide some of the data so that we will be able to see. Now when I select Byawar, will it show me Byawar sales? Can you see guys? Now it is showing me Byawar sales. When you select Jodhpur, is it showing me the sales in Jodhpur? Yes, it is showing me the sales in Jodhpur. So it is VLOOKUP combined with data validation. So when you create a dashboard, you have to combine multiple tools together. Okay, so what I have done is, यहाँ जो हमने डैशबोर्ड बनाया है, इसमें हमने क्या किया है कि this sales for year 21, 22 and 2021, this I have taken from this get pivot table. Now you want to go to the source data. यहाँ तो मैंने normally copy किया था, then I pasted it in the number format. So you cannot see any link over here. ठीक है, यहाँ पे number है. If you change it, suppose मैं 4 crore 40 को अगर 1 crore कर देता हूँ. Now just see what will happen to the symbol, the green symbol that was fascinating. ठीक है, 1 crore 93 लाख से सेल 4 करोड़ होगी, तो हमारे को ग्रोथ शो कर रहा है परसेंटेज में भी और सिंबल के साथ. लेट अस चेंज दिस फिगर और मैं यहाँ पे इसको 1 crore 40 lakhs कर दूँ. See, it has become 38% and यहाँ पर ये जो सिंबल है, it has turned to downward symbol. ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता है, यहाँ पर ये मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है. ठीक है, I'll show you how that we can change the color also. ठीक है, कि जब डाउन हो जाए तो रेड कलर देखे और ग्रीन हो जाए तो अप हो जाए तो ग्रीन देखे. We can do that also. ठीक है, so how we will do that? First let us see कि ये डैशबोर्ड बनेगा कैसे. तो कुछ नहीं करना है. Let us suppose you want to create a dashboard over here. सबसे पहली चीज, you have to remove the grid lines. ये कहाँ से हटेंगी? So you have to go to the view, show and just uncheck this button grid lines. So when you uncheck, you have a clean white background. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए. आप यहाँ पे सेल्स लिख देंगे और फिर 2 फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे. फाइनेंशियल ईयर 2021 and financial year 21-22. I've changed the sequence. ठीक है, you can put इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया. So 21-22 on top and then 2021. And similarly, I want profit. So I am putting a profit over here. Profit. और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए what I've done is I've just selected this and I've changed the background color to, we can select this color and you can select white. Okay. Now you want your answer to come here. यहाँ पे आपको numbers चाहिए. You want to see the numbers over here. Okay. So this should be highlighted. So I'm just changing the background color of this and I'm putting a lighter color over here. So I'm putting a yellow color over here. And I want the text to appear in blue. तो ये मैंने change कर दिया. Now, if we want to copy the same format in Excel, okay, you don't have to do donkey work. See, we have to be smart. So you just copy and then you select this and click on this format painter. इस पे click करेंगे and you just drag it over here. Sorry, you just again select this. Copy this, select this format painter and paste it over here. Okay, so I'm getting this format. Now, how to get the sales data over here? यहाँ पे मुझे सेल का नंबर चाहिए 21-22 का. तो again I'll put, you can put a formula or simply what you can do is, ये डेटा है कहाँ पे, पहले तो ये ढूंढो कहाँ से लाना है. तो हमने जो वर्किंग करी थी डैशबोर्ड की, यहाँ पे देखिए this data is there. In this working sheet, this data is there. 21-22 total sale is this much and total profit is this much and 2021 का ये है.
So I want to give a reference of this sheet and this column B11 and C11. So what I'll do is I'll just put a, okay, so we are creating the dashboard here. So I will say it live dashboard. So I'll just put a equals to sign. Everything starts with the equals to in Excel. जब भी आपको कोई formula या कोई link करना है तो आप equals to press करेंगे and then you can go to the sheet and then you can select the figure simply from here and press enter. तो यहाँ पे ये figure आ गया. Again, for taking the profit, the sale for year 2021, again you go to the working and then you select the figure, sales figure from 2021. यहाँ पे sales का figure आ गया. We were to show the increase, decrease and the percentage change also. तो उसके लिए मैं 2 कॉलम फिर से इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है. और सिमिलरली प्रॉफिट लाने के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रॉफिट का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे. सो आई एम सेलेक्टिंग दिस प्रॉफिट हियर और इसी को सिंपल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है. एंड यू कैन सेलेक्ट दैट E3 की जगह यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा एंड विल बिकम this G11. So I'll put this equals to G11. So this is my profit figure. This is my profit figure for both the years. This is my sales figure. Okay. Now you want to see the percentage change. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Again you have to apply the formula. This minus this divide by base year into 100. So you can see that there is a 56% change. ठीक है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. और you can just say growth in sales. So you can unmerge, you can put it here and you can say growth. यहाँ पे you want to show the symbol, ठीक है. और उसको कैसे इंसर्ट करना है that we are going to see now. So we will put a if condition, ठीक है. if formula हम काम में लेंगे, if this figure is greater than 0, then you want to see a green up symbol, ठीक है. अब वो symbol कहाँ से आएगा? How to insert a symbol in Excel. So what you have to do is कि आप को insert tab में जब आप जाएंगे तो on the right hand side you will see symbols and on the symbol you will see an option of geometrical shapes, ठीक है. और यहाँ पे आपको ये arrow दिखेंगे up and down वाले. So you can select this arrow and say insert, ठीक है. And you can also select this down arrow and say insert and close this. So I've inserted these two symbols, ठीक है. अब क्या करेंगे, इनका font size और color हम change कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन चलिए कर देते हैं. आप इनको अलग अलग कॉलम में रख लें, अलग अलग रो में. You can just keep them, ठीक है. This is all working for the formula, ठीक है. And you can increase the size. And इसको we can put a green in green color and this we can put in a red color. ठीक है, ये दोनों symbols आ गए. Now if this is greater than 0, then what?
we want to select this, comma, this, and then close the bracket. Because I have given the color यहाँ पर, तो ये ऐसा आ गया. इसको एक काम करते हैं, इसको black ही कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ पे इसका font size you can increase. Now if I change this, should the, now this data is taken from the pivot table. तो pivot table के डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं and just paste it again. And when you paste, तो आप select करेंगे paste special में values या 1 2 3 डायरेक्ट आप ये select कर सकते हैं. तो now it is pasting the data as a value. You can see यहाँ से pivot से आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ data आ रहा है, number आ रहे हैं. So you can just change this data, and when you change you can see -30% and down symbol, लेकिन ये green और red नहीं आ रहा है. तो what we can do for that, क्योंकि यहाँ पे जो formatting है वो ये काम कर रही है, यहाँ पे यही काम कर रहा है, we are not getting these numbers. So what you can do is you can just copy this, and in your formula you can put inverted commas and paste this. Just copy this symbol, and in this formula you can just control V and OK. And then I'm just putting a 0 over here for the time, और इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ. And you can put it here. So you can see that icon is changing, but the color is not, okay, because the formatting is there, okay. But additionally you can do that, but we will not focusing on it more, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी and we are short of time, ठीक है. So that is how you can create. Yes, on YouTube you can get different videos and you can do your own research and you can get, but this is idea is to tell you how you can create a dashboard, because in one session of 1 hour 2 hours it is not possible to teach everything, but I'm just giving you a holistic approach of how to create a dashboard, ठीक है. Similarly you can just create this over here, you can just copy paste, और यहाँ पे भी ये आपको same formula will work over here, है ना. और यहाँ पे हमको ये, because this is amount is increasing, तो ये काम कर गया, ठीक है. And you can put that growth formula over here also, and you will see a -32. So -32 पे you will get a down arrow, you should get a down arrow, but यहाँ पे H2 selected था, ठीक है. If you see this formula, so it was H2. If I select I3 I2, you will get a down cycle. So this is the first column that we have got. Now how you can create a drop down, ठीक है. तो हमने जैसे वहाँ पे drop down बनाया था, सेम यहाँ पे बना लेते हैं. तो you can select city and then sales, and you can select, you can create a list over here. So again go to data and data validation and list, and when you click on OK, yeah, you have to select a source first. So source was there in our working for dashboard, and this is the list, this is the source, and then press enter and then OK. So here is a drop down, और यहाँ पे again you have to apply that VLOOKUP वाला formula. So VLOOKUP is this, comma, table array, this is the table array, you can select this also, and comma, and then 2, because in column 2 we have all the sales amount, and then false. So when you change the city, the sales will change, right? And you can put one more filter also, financial year, and you can select the financial year. But यहाँ पे भी आपको क्या दिखा रहा है, list दिखा रहा है, ये city वाली list दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको copy paste किया है. So again you can select the year also, the dates also, और उसके हिसाब से उस particular year का sale भी आपको वो दिखा देगा, ठीक है. So sales and this. Now if you want to create a chart of this, so again you can just click on this
and insert. And now let us create a pie chart. या चलो map दिखाता हूँ. So this is again an advanced feature. Just give me a minute. This is, you're going to see something very amazing now. Just hold on for 1 minute. Or so I'm just selecting the cities total sales. ठीक है, ये हमने total sale और city का data लिया है. I'm just pasting it in a new sheet, and we are going to create a map. So आप map पे click करेंगे and you go to this. Okay, so first you have to identify this as a city. So in this Google, this Excel, in the data you have option like data types. ये अगर आप 19 या 2016 या 365 यूज कर रहे हैं तो ही दिखेगा, otherwise नहीं दिखेगा. So when you go to data and when you select geography, see what happens. Now this has been converted into a map. ये राजस्थान का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है और अलग अलग सिटीज आपको दिखेंगे, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर, किशनगढ़. इसके सामने यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी आ गया. When you click on this, you will get to see the data about Ajmer. We are diverting little bit from the dashboard and the pivot table, but this thing was important, so I thought let me introduce this also concept also. Data types में आप जब सिटी पे क्लिक करते हैं और उसको ज्योग्राफी सिलेक्ट कर लेते हैं, when you click on this symbol, it tells you about that particular city. ठीक है, बट यहाँ पे हमारा आइडिया था कि हम ये चार्ट लेके आए और यहाँ पे आपको ये टोटल सेल दिखा रहा है. When you select this as sales and you can select this as city. And now let us create a map from it. Insert maps. See, this is a chart which we have created, and उसमें आप अलग-अलग color scaling भी दे सकते हैं. We can change the color format also like this. And you can insert this chart in the dashboard. तो यहाँ पे ये जो छोटे-छोटे एरिया है, ये आपका सिटी है basically, and you can add data labels over here and add data labels. It works better with the different states and all, but ये actually city wise जा रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा it is not giving you that look. But when you see that from the different state wise, तो आप ये state wise chart भी यहाँ पे insert कर सकते हैं, और we can just insert the city wise chart also. तो यहाँ पे आप इसको click करेंगे and then you insert and you can select a pie chart too. See this. Now, if this chart is presented to the management, what kind of view they will have about this sale? And you can add the data labels also. Now see, so we can show to the management, see, this is your percentage of share from different cities.
कि उदयपुर से 12% का सेल आ रहा है, अजमेर से 12 आ रहा है, जोधपुर से 12 आ रहा है, किशनगढ़ से 15 आ रहा है, कोटा से 17 आ रहा है. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स द डेटा दैट यू कैन डू. ठीक है. Similarly, we can create a pivot from on the basis of customers also. And I wanted to show you something more. Let me just create one more chart for you. So we had put one chart over here, we have put the sales over here, and now we are going to show the management, the sales as per the customers. So again, I'll go to the pivot table wali sheet and I'll create okay, the working. And then यहाँ पे हम क्या करेंगे कि instead of the area, we will select the customers now. So we'll go to the field settings and then you remove the location from the rows and you put the particulars column here. So now these are the different customers. ठीक है. और इसके लिए हम line chart use करेंगे. So we want to see the sales and the GP. So I'll show you the line chart or the columnar chart. ठीक है. Because there are so many parties, you will see this. And let me just create a line chart for you all. So go to insert and then recommended charts and let us create a line chart. It is showing so many parties. You just want to see the top 5. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डेटा को थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं और उससे हम चार्ट क्रिएट करेंगे because that will be more meaningful. So you can, on the pivot, you can select filter and you can select top 10. So now this is getting reduced to top 10 parties, and then you can create a chart with these top 10 parties, insert, and then you can select a line chart, this one, and then you can copy it in the main dashboard. So these are the different sales. एक second, grand total. Just don't select the grand total while doing the creating a chart. So you can insert chart and then you can select a line chart and then say okay. Or let me just select the sales only and not the profit.
Okay, row number 5 has grand total. Yeah, that is the thing. Just give me a moment. So you say filter and you say top 6. Okay, let me just copy it somewhere else and उसके बाद हम लोग chart बना लेते हैं. You can remove the grand total, and now when you create a chart, it will give you proper result. Okay, now this is showing you that Deepak Electricals is the top party amongst the other top 10, and it is showing you the different sales as per the different parties. You can just plot some numbers also to give it an idea about the numbers, and you can put data series also. These different things can be done with the help of this thing, pie chart. Now, one more thing is slicers in pivot table. Now, this is again a new concept and it is an interesting concept. वो क्या करता है, when you insert a slicer in the pivot table, that allows you to select the multiple data and filter it also accordingly. So you go to insert, and insert में आपको एक option मिलेगा. Along with the pivot tables, you will get to see one slicer also. Okay, so when you select this data and you say insert, okay, now you want to see from the B2 registered and unregistered wise parties, okay, that we have put. Now you will get this insert, and let me insert the time, this date also, and will give you some more options. Okay, now we have the data as per the quarter and all. Now what we are going to do is we are going to insert slicers. So slicer में हम ले लेते हैं एक तो category, then we take location, and then we take the party wise party name, and you insert that. Now these are the three slicers that we have got. You can select these three and copy it in your dashboard. Now what these slicer will do, let me just show you here itself first. So when you select B2C, and Ajmer, so it is going to show you only the sale which is done to B2B parties in Ajmer. When you select B2B and Jaipur, it will show you all the parties which are belonging to Jaipur in this list. And you can select any party and you can see his particular sale. If you want to see the Kishangarh parties, then you can see. So this is how this slicers are also useful when you want to analyze the data as per a particular condition.
And when you can put the sizes in the chart, then these totals, if you put the dashboard as per the location wise and category wise, you can see different options available in the selection menu also. Okay, so this was all about creating a dashboard and pivot tables in Excel. Although it is a vast topic, but I try to cover the main points, the data points which are important. And we started with very basic of like how to arrange the data and how to format it, then how to create a pivot tables, how pivot tables can be created across multiple items, and then we deep dive into creating a dashboard. So dashboard is a huge process which will occupy some time of yours, and then you have to see what data to put, where to put, and how to like categorize it. जैसे हमने यहाँ पे sales select करा है, city select करा है. Similarly, you can select the party name also, and you can create a drop down. So the more data you give to the this dashboard, it will be more customizable. And when you create slicers and you link it with the charts, when you change the slicer, the charts will automatically change. That is the beauty of dashboard. But in a session of 1 hour or 2 hour, it is not possible to cover everything. But yeah, now I'm open to any questions that you might have, and we can have a open session. Thank you, sir. Thank you, Dhaval. If any member have any query, he may ask. So I have a dedicated YouTube channel also, on which I have put some of the videos on Excel. You can just search on my name, and then you can see those videos on different aspects. But learning is important, so you have to explore things and then apply. अगर हम कुछ सीखते हैं और practice नहीं करेंगे, then slicer is another term which can be act as a filter. Yes, so slicer works as a filter only. So you can put slicers, और फिल्टर में हमको अलग अलग बार फिल्टर देखना पड़ता है. वहां पे आपको ऑप्शंस मिलता है कि यू कैन यूज द स्लाइसर एज अ फिल्टर एंड यू कैन फिल्टर योर डेटा. ओके, you want me to explain slicer once more? Okay, fine. Let me just share my screen again, and I'll show you how the slicer works. Okay, now so these were the 3 slicers that I've created. Now how to create a slicer again? When you insert a pivot table, you go to insert, you will get an option of inserting a slicer also along with this thing. And I did not show you timeline. Let me just ask this. In insert option, you will get 2 options, slicer and timeline. So when you click slicer, it asks you what kind of slicer or filter you want. So you want to filter by location, you can select location. If you want to filter by category, you can select category or party name. And then you press OK. So it gives you 3 options. Okay, you can arrange the slicer as per your requirement. Now when you select Ajmer filter, it will filter the data as per the city, and it will filter the party names also. So this is the functionality of a slicer.
Now, when you insert a timeline, let me just show you 1 minute. Let me just talk 1 minute on that also. So on filter, you go to timeline and no connections. Okay, so timeline requires the date column to be there in the data. So when you click on date, it will give you a timeline. ठीक है, timeline का मतलब क्या होता है कि कौन से month में कितना sale हुआ है, that data will be made available to you and you can get this because this data is split over the periods. तो आपको यहाँ से timeline भी मिल जाएगी. You can select quarters also. So quarter 1, 2, 3, 4. So this is a timeline. So if the management want to see कि what is the quarter sale, quarter 1, 2, 3, 4, what was the sale of that particular year. So you just need to select that in the timeline and you will be able to see all this. Now all this you have to put in the dashboard, arrange it in a systematic manner, and then when you select the timeline and the charts together, your data get linked. So when you click on this slicer and you say report connections, so it will report this with your pivot table and it will start working on your live data. So whenever you when you connect the slicer with the data, it works on the table. So you have to report connections and then you can use the slicers. Okay. So I hope that I've addressed Rohit question on slicer. Any other thing that you want to ask? Okay, thank you. Now over to you. Yes, sir. Now over to you, Pooja ji. पूजा जी अनम्यूट करिए ना. Okay, I think there's some technical issues. Now I would like to request CA Saurabh Chandak for official vote of thanks. CA Saurabh. Saurabh not audible. I think there is some technical issues. Now, on behalf of Jodhpur branch, I would like to thanks our today's faculty, CA Alok Sethi ji, for wonderful deliberations. It was in detail, yet the time was short. But whatever the time, it was good. I'm really thankful to you. I'm also thankful to all the audience and the members who present here and learned new things. Now, last, I would like to thank our technical team. Sir, I am audible. Yeah, now you are audible. There was a technical issue, sir. Official would have thanks have been done by Dhaval sir, but still, sir, it was a great pleasure, honor to have you here. And I would thank all the members to listen to the faculty very properly and keenly. And definitely thank you, sir, for sharing the esteemed presence and knowledge on this platform. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alok sir, Thank you. for giving your valuable times. Thank you. Hopefully, we'll see you in physical seminar too. Sure, sir.